Hello everyone, welcome to PW OPSC Wallah and welcome to the Hindu editorial analysis session. या पूर्व आमे important चारिटा session discussion करथिले on the Hindu editorial analysis and today is the fifth session. जो माने नुआ लर्नर जो माने फर्स्ट टाइम पे आज क्लास करूछंती ये क्लास को सेमानन को पई गोटे important information कि why current affair is important for us बा what is the source को source रो अपन current affair पढिबा दरकार. So this is the exhaustive list like the Hindu, EPW, Yasuna, Kurukshetra, Geography and you down towards Science Reporter, World Focus, Frontline. ये सब important sources, ये source को हमें पढ़िवा दरकार. But in general, it is very much difficult for each and every candidate to go through all these sources and to make notes. ताको पढ़िवा, बुझिवा, पुनी exam रे ताको represent करिवा, answer sheet रे incorporate करिवा. This is quite a difficult task. So for this purpose, जदि हमें देखिवा PW platform रे Hindu editorial analysis रा क्लास होची every Sunday at 11 AM आपण क्लास पाई परिबे मंडे रु सैटरडे पर्यंत जहां एडिटोरियल आसीथिबो रिलेवेंट एडिटोरियल एवं जोगुडा काम एग्जामिनेशन पे इंपोर्टेंट सी सबुरो विथ नोट्स एटी कंप्लीट डिस्कशन रहिबो. सो जेतबे एडिटोरियल पढुचंदी को पॉइंट पढिबे एवं को पॉइंट टू स्किप करिवे ऑलरेडी कहिछि कि व्हाट नॉट टू स्टडी इज इंपोर्टेंट जेहेतु एटी आपनकर सिलेबस बहुत अधिक एंड डे टू डे बेसिस रे प्रत्येक दिन सकाळु हम घरे न्यूज़पेपर पढ़ी गला सो ऑटोमेटिकली सिलेबस एनलार्ज हो जाउछ. प्रत्येक दिन जदि हम देखिबा सिविल सर्विस रो सिलेबस आड हे जाउछ बढ़ी बढ़ी जाउछ. एई कारण रे जदि हम देखिबा ताले को पॉइंट को फोकस करिया दरकार ना पॉलिटिकल न्यूज़ रिमार्क लोकल पॉलिटिक्स आको पढ़ी पेनी दिस इज नॉट टू स्टडी आको नेग्लेक्ट करिबे. देन लेस एम्फासिस ऑन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट डेथ अवार्ड रिलेटेड टॉपिक्स ये टॉपिक गुडा को मध्य स्किप करिवे ये टॉपिक पढ़िबार किछ आवश्यकता नाही. ताले व्हाट टू स्टडी को पॉइंट को पढ़िबे सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाद जदि किछ इंपोर्टेंट वर्डिक्ट अछि बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बस सिक्योरिटी इश्यूज लाइक नक्सलवादी मानक ऊपर आतंकवादी मानक ऊपर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रे इंसर्जेंसी ऊपर जदि किछ इश्यू आछि बा कम्युनल वायलेंस ऊपर जदि किछ इश्यू आछि साइबर क्राइम ऊपर जदि किछ इश्यू आछि देन वल्नरेबल सेक्शन माने एससी एसटी ओबीसी वुमेन एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी ए कम्युनिटी मानक ऊपर जदि किछ स्पेसिफिक सोशियो लीगल इश्यूज बा सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज अछि बा डेवलपमेंट रिलेटेड इश्यूज अछि ह्यूमन राइट्स रिलेटेड इश्यूज अछि ताले ताको पढिबे. देन आईआर स्पेसिफिक इश्यूज इंटरनेशनल रिलेशन स्पेसिफिक इश्यूज मनकर किछि टॉपिक आसीछि इंडिया रो वल्नरेबल नेबर मानक ऊपर बा वोलाटाइल नेबर मानक ऊपर बा अनफ्रेंडली नेबर लाइक चाइना और पाकिस्तान ऊपर बा वोलाटाइल नेबर लाइक छोटो छोटो कंट्री जो माने रहले नेपाल भूटान बांग्लादेश मानक ऊपर. सो ये सब हम पई इंपोर्टेंट ए टॉपिक को फोकस करिवे जेतेबेले एडिटोरियल एनालिसिस पढुचंती बा कोनोसी न्यूज़ एनालिसिस पढुचंती ता पूर्वरु यू शुड नो योर सिलेबस प्रॉपर्ली एंड माइक्रो सिलेबस एनालिसिस करिवे. जीएस पेपर 1 2 3 4 चारिटा जाक पेपर रो इंपोर्टेंट माइक्रो सिलेबस जहा तक सब मन रखिवे. जेतेबेले न्यूज़ पेपर पढुचंती देखिवे कि से टॉपिक ता आपनकर को जीएस पेपर रु आसीची 1 2 3 4 कोथरु आसीची को टॉपिक रु आसीची को सब टॉपिक रु आसीची से अनुसार पढ़िबार आवश्यकता रही. सो लेट्स कम टू टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन. आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करिबा मूविंग द स्पॉटलाइट टू द ग्रासरूट डेमोक्रेसी. मूविंग द स्पॉटलाइट टू ग्रासरूट डेमोक्रेसी बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ये. दिस टॉपिक इज बेस्ड ऑन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. ये एक्ट को आसीबा पूर्व मु गोटे सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी ऊपर कहबी. दिस थ्योरी वाज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू. कोन कहली सेपरेशन ऑफ पावर. This theory was given by किए दिथिले. This theory was given by Montesquieu. बहुत इंपोर्टेंट ये मन रखिबे. तीन प्रकार सेपरेशन ऑफ पावर अछि. हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर, वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर एंड डायगोनल सेपरेशन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल सेपरेशन ऑफ पावर कोन ना इनसाइड द गवर्नमेंट जदि हम देखिबा गवर्नमेंट हैज थ्री ब्रांचेस लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी. लेजिस्लेचर रो फंक्शन होउची टू फॉर्मुलेट लॉज, एग्जीक्यूटिव रो फंक्शन होउची टू एग्जीक्यूट लॉज and judiciary is there to scrutinize the function of legislature and the executive. तको हमें कहउछ horizontal separation of power. The second category is your vertical separation of power. Vertical separation of power there are two government, one government at the center, another government at the state. जा को हमें फेडरलिज्म बोली कहउछ. बा vertical separation ऊपर डिपेंड करी दुई प्रकार रा गवर्नमेंट रही पारे. गोटेला unitary form of government आ गोटेला फेडरल गवर्नमेंट. unitary government रे there is a single government. फेडरल गवर्नमेंट रे दुई प्रकार रो बा दुईटा गवर्नमेंट रहबे. गोटे गवर्नमेंट एट द सेंटर रे केंद्र सरकार बा सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य रे राज्य सरकार बा स्टेट गवर्नमेंट. बुझी पारिले समस्ते. येला वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर. नाउ डायगोनल सेपरेशन ऑफ पावर कोन ये कहउची दिस इज अबाउट द
गवर्नमेंट एट द लोकल लेवल ले गवर्नमेंट सेमती रूरल ले रही पारंती रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंडिया रे जदी हम देखिबा एटा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार आसला अर्बन गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार आसला एवं जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेपरेशन ऑफ पावर हम देखिले लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एवं जुडिशियरी तीनटा ब्रांच हला एवं एठी हम देखिले इन इंडिया वी हैव अ फेडरलिज्म ये दीटा होचंदी कोन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी एवं फेडरल स्ट्रक्चर ये होचंदी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोटा आपण पढिथिबे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस ये दीटा होचंदी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये दीटा फीचर को द गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे बाय एनी मींस ऑफ अमेंडमेंट गवर्नमेंट आर्टिकल 368 को यूज करी कोनोसी प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी जो ये जो दीटा पावर सेपरेशन ऑफ पावर अच्छे ना हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल एक्ट को गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे और द पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे ये ला बेसिक कांसेप्ट रिलेटेड टू सेपरेशन ऑफ पावर नाउ व्हाई सेपरेशन ऑफ पावर काहे की रहिबा दरकार व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेपरेशन ऑफ पावर बिकॉज़ जदी concentration of power way that leads to arbitrary form of government or unnecessary concentration of power it leads to more tyrannical form of government पाखर अधिक पावर हे जाय जब पावर अधिक होय जिवो it will look less into the rights of people ये लोक मानकर राइट्स को कम ध्यान दब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे जदी हम देखिबा फंडामेंटल राइट बा ह्यूमन राइट्स दिस इज अ वेरी मच और वेरी बेसिक प्रिंसिपल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट now government जो अधिक पावरफुल है जाए it tries to take away individual rights or it tries to take away the human rights or the fundamental rights याको प्रोटेक्ट करबा होचे हमर बेसिक ऑब्जेक्टिव सेति पई पावर सेपरेशन करा जायछि ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रखिया पई पावर सेपरेशन करा जायछि एफिशिएंसी एफिकेसी को इंक्रीज करिया दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर now our topic of discussion achi about moving to the spotlight to the grassroots level of democracy so grassroots level of democracy ର अर्थ होची लोकल गवर्नमेंट दुई प्रकार मु ऑलरेडी कहली रूरल लोकल गवर्नमेंट एवं अर्बन लोकल गवर्नमेंट रूरल लोकल गवर्नमेंट होची आपनकर जोटा पंचायत राज इंस्टीट्यूशन देखुछन बा इंडिया रे एस्टैब्लिश हेची बाय वर्च्यू ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अर्बन लोकल गवर्नमेंट ता केमती हेची ना बाय वर्च्यू ऑफ योर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ दिस लोकल रूरल एवं अर्बन लोकल गवर्नमेंट सहित प्रॉब्लम कोन होची जदि हमें देखिबा देयर इज दिस एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन समस्त इलेक्शन कमिशन कथा जानिथिबे सेंटर रे सेंट्रल इलेक्शन कमिशन जोटा अछंती सीईसी जहा को कहै जाउची स्टेट रे स्टेट इलेक्शन कमिशन तो एटी प्रॉब्लम कोन द मोस्ट इंपोर्टेंट लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज आपको देखिया मिलुची इन केस ऑफ एससीसी एमानकर स्टेट गवर्नमेंट सहित स्टेट इलेक्शन कमिशन रो स्टेट गवर्नमेंट सहित अनेक समय हमको डिस्प्यूट बा कॉन्फ्लिक्ट देखिया पई मिलुची आर बेस्ट एग्जांपल होची वर्तमान कर्नाटक स्टेट इलेक्शन कमिशन यार कहा से डिस्प्यूट चलितला अगेंस्ट विथ द स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट से द प्रॉब्लम कोन द प्रॉब्लम व्हिच इज विथ इनएडिक्वेट एम्पावरमेंट ये बॉडी तो अच्छी एससीसी तो एग्जिस्ट करूची स्टेट इलेक्शन कमिशन एग्जिस्ट करूची बट दे आर लेस एम्पावर्ड एमान को पथरे एम्पावर एमान दे आर नॉट एम्पावर्ड रो अर्थ कोन they are not taking their own decisions को ग्राउंड रे को डिसीजन में माने पहुंचित होतनी तापरे वर्तमान डिस्कशन करबा they don't have the power to conduct delimitation of wards or manage the electoral rolls independently central election commission ऊपर जेतबे आपण पॉलिटी गवर्नेंस रे पढुतले सेठी देखिथिबे delimitation करिया मध्ये कार दायित्व थिला ना सेंट्रल इलेक्शन कमिशन करथिले प्लस इलेक्टोरल रोल तयार करिया मध्ये ताकर फंक्शन इन द सेम वे व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेट इलेक्शन कमिशन सेम पावर सेम रेस्पॉन्सिबिलिटी मध्ये ट्रांसफर हवा दरकार कहा पतु ना स्टेट इलेक्शन कमिशन पतु डेलिमिटेशन वार्ड रे डेलिमिटेशन करिवे डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज हे गले तो वार्ड रे ज्योग्राफिकल एरिया टाको कम बेसी करिवार अधिकार रहिबा दरकार प्लस इलेक्टोरल रोल इंडिपेंडेंटली फॉर्मुलेट करिवार क्षमता रहिबा दरकार ये दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट इशू जोटा स्टेट इलेक्शन कमिशन वर्तमान फेस कर सो इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एवं स्टेट गवर्नमेंट या मझी रही जाउछन स्टेट इलेक्शन कमिशन सो इट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक डिस्प्यूट और इट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक कॉन्फ्लिक्ट क्या का भीतर ना गोटे साइड रे सेंट्रल इलेक्शन कमिशन आउ गोटे साइड रे स्टेट गवर्नमेंट मझी रे रहले कि ना स्टेट इलेक्शन कमिशन सो इट क्रिएट्स आर्बिट्रारीनेस और डिले इन द इलेक्शंस
then there is lack of resource anka pakar jetik resource rahiba kata setik resource nahi most important co resource that is the fund allocation jetik rahiba kata lack of resource thiba karanaru ye independently tankara function guda ko discharge kari paru nahi and automatically it leads to public trust erosion. Public trust mane government prati thiba lokomanakar perception अर्थ होची what people are thinking about the government or what people are thinking about a particular organization. In this case, the organization is the SEC, State Election Commission. So ये कहला को चाहूँ कि what is people's perception towards State Election Commission, whether people trust this organization or people don't trust. यदि लोकमानकर trust नहीं, then it is like a democratic erosion. It is like a democratic erosion. Then is election जहाँ पे होची election गुड़ा का time रहो. So now we are talking also about one nation one election at a time sabu jagare sabu rajya election guda kote same time raho. So there will be we can save the government resource government exchequer upar unnecessary burden padiboni security issues madhe unnecessarily create haboni ta upar ame separately discussion kariya. So jodi ame ethi dekhiba electoral reform darkar amku kon pai na to strengthen the three tier structure ame kaha ko कहउतले ना local government को ame three tier structure बोली कहउछ याको लोकल गवर्नमेंट को जोटा 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अनुसार इनाक्ट होला पर इंडिया रे आसी सो जेमती हमें इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया देखुचे ईसीआई इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया कोठी ना एट द सेंटर स्टेट रे सेम वे रे सेम पैरिटी रे आसीवा दरकार ट्रांसपेरेंट एवं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रा आवश्यकता रहिछ कोन कहली ट्रांसपेरेंट एवं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया रा आवश्यकता रहिछ कोठी ना इन इंडिया सॉरी इन ईच एंड एवरी स्टेट जेमती सेंटर रे सेंट्रल इलेक्शन कमिशन इन द सेम वे स्टेट रे स्टेट इलेक्शन कमिशन प्लस डेलिमिटेशन पॉइंट फिक्स्ड इंटरवल फॉर डेलिमिटेशन दैट इज एवरी 10 ईयर प्रत्येक 10 ईयर रे स्टेट इलेक्शन कमिशन पाखरे रिस्पांसिबिलिटी रहबा दरकार कि दे हैव द अथॉरिटी टू फॉर डेलिमिटेशन से माने कोन करिवे ना वार्ड गुडाकर ज्योग्राफिकल एरिया कम बेसी करिवे डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाय सो गोटे वार्ड को से माने भांगी के आ गोटे वार्ड रे मिसे करिवे पॉपुलेशन कम अछि तो माने this is like adjustment then transfer of power to the state election commission ये जो पावर कथा मैं ऑलरेडी कहली द पावर ऑफ डेलिमिटेशन एंड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर लोकल गवर्नमेंट ये कहा को ये रिस्पांसिबिलिटी कहा पाकर रहबा दरकार इट शुड बी विद द स्टेट इलेक्शन कमिशन कहा पाकर विद द स्टेट इलेक्शन कमिशन. So this is about 73rd 74th constitutional amendment act एवं मोस्ट इंपोर्टेंट इश्यू कौन चली बर्तमान याको यूटिलाइज कोडी करि परिबे जो मानकर ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मानकर ऑप्शनल सोशियोलॉजी जो मानकर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर टू सम एक्सटेंट ज्योग्राफी रे मध्य फेडरलिज्म ऊपर जदी केबे क्वेश्चन टिपिकल पचारि परिबो बट ये तीनटा ऑप्शनल बेसिकली पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवं सोशियोलॉजी ऑप्शनल ये टॉपिक इन डिटेल अछि तेणु आपन को पढिया पई पड़िबो जो मानकर ए तीनटा ऑप्शनल या बाद जदी हमें देखिबा जीएस पई प्रिपेयर हला बेले तो हमें गवर्नेंस इश्यूज पढुचे बा लोकल लेवल ले डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन मानकर रिस्पांसिबिलिटी ऊपर पढुचे गवर्नेंस इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस रे ये क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन एठी मध्ये आसी परिबो या बाद एसए पेपर जदी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऊपर लेक्चर सेटिया को यूटिलाइज करबे. सो ये टॉपिक रो रिलेवेंस हमें देखिले को जीएस पेपर यूज करि परिबे एवं को ऑप्शनल पेपर रे हमें आपको यूटिलाइज करबे. नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकंड टॉपिक ऑन बायोटेक रिवोल्यूशन इन इंडिया जहाँ बायो E3 प्रपोजल बोली कहा जाउची बायो E3 प्रपोजल एंड बियॉन्ड मोस्ट इंपोर्टेंट एटा आपनकर जीएस पेपर 3 सब्जेक्ट होची साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी टॉपिक हैला बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. सो एटी ये कहां ऊपर हम एटी डिस्कशन करछे ना व्हाई बायोटेक्नोलॉजी रो सिग्निफिकेंस कोन दिस इज वन ऑफ द emerging field of technology. Recently, Indian cabinet it has approved Bio E3 biotechnology for economy, environment and employment. कौन कहली biotechnology for economy, environment and employment. आपको कहा जाउची Bio E3 बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबे ये टर्म को Bio E3 कौन पाई ना proposal to enhance biotechnology manufacturing increase करिया. सो ये जो पॉलिसी हमें देखिले बायो E3 पॉलिसी यार ऑब्जेक्टिव कोन ना ये कहउची बायो बेस्ड केमिकल इंक्रीज करिवो फंक्शनल फूड इंक्रीज करिवो प्रिसिशन बायोथेरापेटिक्स क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कार्बन कैप्चर मराइन और स्पेस रिसर्च ये सब फील्ड रे बायोटेक्नोलॉजी रो यूटिलाइजेशन करा जे
आर गोटे छोटो एग्जांपल देखौची ऑन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रे कोन हुए ना बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और टू इंक्रीज द टोटल क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करिया पे बायोटेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करा जाय है बायोटेक्नोलॉजी को यूज कला परे एटी हम जदि देखिबा HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड को यूज करा जाय जहार प्रोडक्शन कैपेसिटी नॉर्मल सीड टू अधिक एक दुई एटी क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करा जाय जदि हम देखिबा अधिक फ्लड समय फ्लड प्रोन रीजन गुडा करे बा ड्रॉट प्रोन रीजन जोटी ड्रॉट अधिक होउछ फ्लड अधिक होउछ से जगह रे एमटी सीड को यूज करा जाय जो सीड रो रेजिलिएंट अधिक फ्लड हेले मध्ये से गछटा मरिबोनी बा गछटा नष्ट होबोनी ता मध्ये पानी जमिले मध्ये गछ पचिबो बा पानी कमी गले ड्रॉट टाइम पीरियड रे मध्ये से गछटा मरि जीवनी सुखिबा कारण ड्राइनेस कारण गछटा नष्ट हो सो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर रे बायोटेक्नोलॉजी रो भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण जेते बायोटेक्नोलॉजी डेवलप होबो गोटे कंट्री रो ऑटोमेटिकली हाई यील्ड वैरायटी सीड आसीबो बा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हमें अडॉप्ट करि परबा टू इंक्रीज द प्रोडक्शन बा क्लाइमेट चेंज रो नेगेटिव इंपैक्ट हम ऊपर पड़िबो नहीं बा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऊपर पड़िबो नहीं सो दैट वी कैन मेंटेन फूड सिक्योरिटी तो ये ला बायो E3 पॉलिसी रो टारगेट यार ऑब्जेक्टिव कोन ना इंपैक्ट मैक्सिमाइज करिया पई हमको कोन दरकार ना इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी नीड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कोन दरकार हमको वी नीड सस्टेनेबल एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये फील्ड रे हमको अधिक आवश्यकता अछि प्लस गवर्नमेंट कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी विथ द प्राइवेट सेक्टर when you talk about research and development जेतले हम research development ऊपर डिस्कशन करूचे this is always the private sector which has an edge over the government sector काहे कि ना private sector अधिक इन्वेस्टमेंट करि परिबो private sector research and development ता more qualitative as compared to the government sector so इट हम ओपन अप कर दबा ए फील्ड रे हम देखो FDI foreign direct investment to automatic route that is 100% बायोटेक्नोलॉजी रे FDI को 100% पर्यंत अलाउ कर दिया जाय सो इट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर अधिक होइतिबा कारण जदि पीपीपी मोड रे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड रे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर सहित मिसी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करूची बा बायोटेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट प्राइवेट सेक्टर की CSR थ्रू रे भी करूची कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी थ्रू रे ताले वी कैन हैव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बा सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट करिकी एई प्रोडक्ट गुडा करो अधिक मात्रा ताको यूटिलाइज करि पाए सो दिस इज द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया प्रथम होची बायो फार्मास्यूटिकल्स bio agriculture bio industrial products bio IT and bio services bio IT and bio services ये होचे डिफरेंट टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड प्रोडक्ट्स और बायोटेक्नोलॉजी कैटेगरीज इन इंडिया जहां को हम यूटिलाइज करि परिबा फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी और बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव कोन ए पर्यंत नै छी ना प्रथम इनिशिएटिव होची FDI foreign direct investment to direct route eta kete 100% FDI allowed so that FDI allow होई जाय प्राइवेट सेक्टर को we welcome और हमें कोन कोचे ना we show red carpet to the private sector it means we generally welcome the private sector to invest more in this field biotechnology field रे investment private sector अधिक और अधिक करू आउ कोन करू इन्वेस्टमेंट सहित खाली इन्वेस्टमेंट करिवो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मध्ये करिवो ए पर्टिकुलर फील्ड Then there is a National Biotechnology Development Strategy 2021 to 25 most important. National Biotechnology Development Strategy. ये aim कौन करूची? It aims to make India globally competitive in biotechnology research, innovation, translation, entrepreneurship, and industrial growth. यार objective होची India को globally competitive करिवो कोउतरे ना in the field of biotechnology research, in the field of innovation, translation, entrepreneurship, and industrial growth. एटा को समस्त मन रखिबे ए पॉइंट को यूटिलाइज करिवे नो डाउट खाता रे जेतबे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बा डेवलप्ड इंडिया ऊपर लिखछंती विकसित भारत ऊपर लिखछंती और इंडिया 2047 ऊपर लिखछंती नाउ गिव इंपोर्टेंस टू बायोटेक्नोलॉजी तो साइंस टेक्नोलॉजी को तो अपन इंपोर्टेंस देबे ही देबे यानी बिना साइंस टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट हैव अ डेवलप्ड कंट्री सो व्हेन यू टॉक अबाउट विकसित भारत 2047 you have to put light on technological innovations and technological developments and among those technological aspects biotechnology is the most important one कहीं ना ये एग्रीकल्चर को रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़िले वी कैन हैव फूड सिक्योरिटी एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स नाउ वी कैन एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट्स इन द WTO डिजाइन हमें एग्रो प्रोडक्ट को फॉरेन कंट्री को मते एक्सपोर्ट करि परिबा सो फॉरेक्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा को कहू फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मध्य इंक्रीज हो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मध्य हम पाखरे बड़ी बड़ी चले सो ये पॉइंट को समस्त यूज करिवे मोस्ट इंपोर्टेंट देन द नेक्स्ट इज बायोटेक किसान हब
बायोटेक किसान हब रो फंडिंग किए करूची ना फंडिंग करूची डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी so there are 51 hubs connect farmers with the scientists and institutions now farmer in one side scientists and other institutions in another side problem कौन हुए farmer सहित ना lack of awareness or lack of how to use different type of technologies farmer बुझी पारेनी कि मो different type रो technology को use केमती करबी how to use information communication technology biotechnology chemical technology mechanical technology को use केमती करबी सो फार्मर अवेयरनेस क्रिएट हवा दरकार एटी गोटे पॉइंट मन रखी गोटे टर्म कहूची ताको आ जाय ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड ट्रेनिंग ऑन एंड ऑफ फील्ड ट्रेनिंग सो ट्रेनिंग कोडी दिया जीवो ना फील्ड रे सिमुलेशन रिलेटेड ट्रेनिंग लाइक प्रोजेक्टर थ्रू रे हमें बतेबा बुझेबा अवेयरनेस क्रिएट करबा बा फार्म ऊपर ही फार्मर को बुझेबा कि केमती मन कर हम कहले मैकेनिकल टेक्नोलॉजी को केमती यूज करा जो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी रे कोन आसुची लाइक कल्टीवेटर हार्वेस्टर ट्रैक्टर ये सब को केमती यूज करा जीवो फार्मर को सेमती केमिकल टेक्नोलॉजी रे कोन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज करा जीवो बा वीडिसाइड केमती यूज करा जीवो चिप्स रे फार्मर को सिखेबा इटी हाई यील्ड वैरायटी सीड को केमती यूज करा जीवो देखा जीवो सो फार्मर इन वन साइड अदर इंस्टीट्यूशंस एंड साइंटिस्ट दे आर इन अनदर साइड तांका भीतर गोटे सिंक हवा दरकार बा तांका भीतर गोटे वी नीड अ वेरी स्ट्रांग और क्लियर कट कम्युनिकेशन देन आउ कोन आसे ना गोवर्धन स्कीम बजेट 2023-24 रे आसिला या अंडर 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स दे आर प्लान्ड विथ अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 crore सो वेस्ट टू वेल्थ प्लांट क्रिएट इज का अंडर ना गोवर्धन स्कीम सो दीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव कोन पाई अछि ना टू इंक्रीज यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ताले सिग्निफिकेंस कोन बायोटेक्नोलॉजी रो यूज पाई इंडिया रे यदि हम देखिबा बायोटेक्नोलॉजी दिस इज द करंट पावर हाउस आको पावर हाउस बोली कुआ जाउछ काहे कि ना इंडिया रो बायोटेक इंडस्ट्री यदि हम देखिबा इट विल रीच $150 बिलियन बाय 2025 2025 सुधा ये इंक्रीज है कि केते हबो ना $150 बिलियन बाय 2025 देन आउ कोन पाई बायोटेक्नोलॉजी हम पाई इंपोर्टेंट ना वैक्सीन पावर COVID-19 time period, it taught us how to use technology or how to develop our own technology to protect our own citizen. So COVID time period रे देखो तो पूरा वैक्सीन कितने फेज रे यहाँ पर रिसर्च है वैक्सीन तो ऑल ऑफ सडन बाहर है यार फेज बाय फेज रिसर्च हुए ता ऊपर प्रथम एटा कहा ऊपर मूसा मानक ऊपर इंप्लीमेंट करा जीवो ता ऊपर अदर एनिमल्स लाइक मंकी ऊपर इंप्लीमेंट करा जीवो रैबिट ऊपर करा जीवो ता ऊपर मनुष्य मानक ऊपर इंप्लीमेंट करा जीवो दिस इज द प्रोसीजर कितने टाइम पीरियड लागि गला हमको टू गेट द वैक्सीन कोरोना हबा दिन रु 2 वर्ष मिनिमम लागि गला हमको वैक्सीन पाखरे पहुंचा पे वैक्सीन गोटे मिलिया कोवैक्सीन कोविशील्ड केते परे आसला जदि ए कोवैक्सीन बा कोविशील्ड वैक्सीन हमको जस्ट विदिन 2 to 3 months ऑफ कोरोना मिल जाई थांता कोविड-19 पैंडेमिक रो मिल जाई थांता ताहाले वी कुड हैव प्रोटेक्टेड अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड इकोनॉमिक लॉसेस जहां इमोशनल लॉस है इन टर्म्स ऑफ एवं इकोनॉमिक लॉस जहां है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड शटडाउन ये सब को हमें प्रोटेक्ट कर रखता है सो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन एज वेल एज इमोशनल लॉस और लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हम मतलब प्रोटेक्शन दे पारि थाते केते बेले ना जदी हम पाखरे बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप होई थाता बा विदिन 3 to 4 months or within 1 to 2 quarter of this COVID-19 pandemic जदी हम पाखरे वैक्सीन गुडा का अवेलेबल होई पारि थाता बट वैक्सीन इन जनरल से समय हम पाखरे अवेलेबल होई पारिला नाही जहा पाई लॉकडाउन शटडाउन दीर्घ दिन धर केला इंपैक्ट इकोनॉमी ऊपर पड़िला इकोनॉमिक डिवास्टेशन एज वेल एज इमोशनल लॉसेस डेथ मध्ये बड़ी बड़ी चल सो ए कोविड-19 ये प्रूव कर देला कि वैक्सीन इज आल्सो ए पावर वैक्सीन इज आल्सो ए पावर जेमति हमें पूर्वरु देखुतले स्ट्रेटेजिक पावर को मानक पाखे जा पर डिफेंस वाइज पावर थला से कंट्री को हम डेवलप कंट्री कहते तापर देखले फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बा इकोनॉमिक पावर जहा पाकर अछि ताको हम सुपर पावर बोली कहले बट वर्तमान हमें कहा कहूचे ना टेक्नोलॉजिकली जो कंट्री जेते डेवलप जहार रिसर्च एंड डेवलप इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी जेते डेवलप से कंट्री को हमें सेते अधिक डेवलप्ड कंट्री बोली मानु सो कोविड-19 हमको ये जिंस सिखे की जाई छी देन द नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन 2.0 एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ये कहूची एग्रीकल्चरल चैलेंज जोटा हम कहिली ऑलरेडी कि क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स सो वी नीड इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट कौन दरकार हमको इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल कंटेंट क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप रे हमें आनी परिबा फ्लड प्रोन बा फ्लड रेजिलेंट सीड ड्रॉट रेजिलेंट सीड ताको हमें यूटिलाइज करि करे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट नेगेटिव इंपैक्ट हम ऊपर पड़िबो नाही
so that हमें food security maintain करि परिबा, accessibility, availability, affordability of the food grains will be there. ये ला important point related to agricultural revolution. There is environmental safeguard. Environmental safeguard जदि हमें देखिबा अनेक गुडे developed form of technologies like the method of bioremediation. Bioremediation technique को हमें use करि परिबा polluted site रो pollution level को कम करिया पई, pollution को degrade करिया पई हमें bioremediation method को use करिया. समस्त पढिथिबे environment रे what is bioremediation. then आउ कोन पई ना innovation ecosystem पई मध्ये important. जदि हम देखिया biotech sector रे ये one of the very vibrant innovative sector, बहुत बड़ा entrepreneurship in the field of biotechnology वर्तमान emerge होछ. So this is a boost to the innovation industry or it is a boost to the tertiary sector कहि परिबा, manufacturing sector कहि परिबा. So finally जदि हम देखिया ना GDP टी increase होछि, total production increase होछि, but total GDP gross domestic product टी increase होछि because of this innovation ecosystem. So more than 5,000 startups in the field of biotechnology emerged in India. ताले problem कोन हम face करते, what are the key challenges to the growth of biotechnology in India? इंडिया रे बायोटेक्नोलॉजी रो ग्रोथ हुआ पाई प्रॉब्लम हमें कोन कोन फेस करते. प्रथम प्रॉब्लम हम फेस करछे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क माने हम पाखरे सेमति इंस्टीट्यूशन बा ऑर्गेनाइजेशन नाहंती जे बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट करिवे. देयर आर इंस्टीट्यूशंस बट सेमति किछि स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन नाहंती दोज व्हिच विल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बायोटेक्नोलॉजी, यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जे बायोटेक्नोलॉजी रो इनोवेशन को प्रमोट करिवो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करिवो. ई सब हम पाखरे नाही. देन इज फंडिंग. कोन नाही हम पाखरे कहली हम पाखरे फंडिंग नाही, सेति के रिसर्च एंड डेवलपमेंट करिया पे हम कोन दरकार फंड दरकार. फंड ता मध्ये हम पाखरे अवेलेबल नाही. अनदर प्रॉब्लम. सो ये फंड को हमें एफडीआई थ्रू रे आनी परिबा, पीपीपी मोड रे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड रे आनी परिबा, बा प्राइवेट सेक्टर को इंटरफेयर करि परिबा, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी थ्रू रे मध्ये इंटरफेयर करि परिबा. देन इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी. कोन कहली इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेसी, हम पाखरे सेति के इंफ्रास्ट्रक्चर नाही. आईपी इनसिक्योरिटी. IP insecurity most important point. So एटी प्रॉब्लम कोन होची, अनेक गुडे प्रोडक्ट ऊपर बड़ बड़ इंडस्ट्री जो माने समान कोन करथि ना ता ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नै जाउछ कि एटा मो प्रोडक्ट, ता पर समान मार्केट रे ताको बिक्री करछन एटा हाई रेट, सो दैट जो मानन को पाखरे कम टंका अछि बा जो माने पोर सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे कैन नॉट अफोर्ड. मन कर गोटे कहबा हमें लेट्स से गोटे किछि गोटे सीड ड्रॉट रेजिलिएंट सीड गोटे गोटे किछि कंपनी बाहर करला, सी तापर आईपी नै गला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नै गला एवं ताको मार्केट को पेटेंट नै गला कि एटा मो प्रोडक्ट, ताको मार्केट रे 5000 टंका रे बिक्री कला. बर्तमान प्रत्येक फार्मर कोन 5000 टंका देई कि अफोर्ड करि परिबो से सीड को. तो आईपी इनसिक्योरिटी होची अनदर प्रॉब्लम. या रिलेटेड सॉल्यूशन मध्ये हमको मिलवा दरकार. देन इज एथिकल चैलेंज. एथिकल चैलेंज रे कोन होची ना बेसिकली व्हेन वी ट्राई टू मॉडिफाई द जीन, जब हम जीन को मॉडिफाई करछे लाइक बीटी ब्रिंजाल हे गला बा बहुत गुडे कोन हाई यील्ड वैरायटी सीड गुडा का आसुची बा जीएम क्रॉप जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स. एथिकल चैलेंज रे जीएम क्रॉप्स, जीएम कोन ना जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो जीन टा को हम एटी चेंज कर दउ, सो इंडिजिनस जीन जोडा थिला से जीन टा वेरी कर दउ, से जीन टा एटी चेंज हे जाउची. से जीन चेंज हे गेले प्रॉब्लम कोन, से जीन चेंज हेले प्रॉब्लम होची ओरिजिनल जीन टा हम पाखरे रहइबोनी, सेटा मॉडिफाई हे कि नुवा धरणर जीन हम पाखु पळे. ऑटोमेटिकली इनसेक्ट गुडा का मध्ये से अनुसार डेवलप होई जिवो, पेस्ट गुडा का मध्ये से अनुसार डेवलप होई जिवो. तो इंडिजिनस वैरायटी किस दिन पर हम पाखरु कंप्लीटली नष्ट होई जिवो. So these are the challenges to the field of biotechnology. Now topic 2 over. Now we'll move to the topic 3. Next topic. Next topic को आसीबा mpox. mpox COVID-19 to mpox ये कुछ एडवांसिंग इक्विटी. रिसेंटली mpox जहाँ को मंकी पॉक्स बोली कहा जाए, mpox को कौन कहा जाउची ना मंकी पॉक्स, आकु WHO डिक्लेयर कले, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आकु डिक्लेयर कले एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न. मने रखंतु पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न किए डिक्लेयर करन सबले ना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करन हैला. सो पुणी गोटे पैंडेमिक गला कोविड-19 गला माने संपूर्ण ए पर्यंत संपूर्ण भाव में जाई नहीं, एबे भी एग्जिस्ट करूची, बट पुणी आउ गोटे पैंडेमिक कोविड-19 पैंडेमिक टू व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स. हमें कोन सिखिचे पैंडेमिक हमको कोन सिखै गला ना, प्रथम हैला वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बा बायोटेक्नोलॉजी रो स्ट्रांग बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर. स्ट्रांग बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर जोठी हमें बायोटेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करबा कोन पई ना
स्ट्रेंथेन करिया पे वैक्सीन को स्ट्रेंथेन करिया पे हैला तो जते जल्दी मु ऑलरेडी डिस्कस कली लास्ट टॉपिक रे डिस्कस कली जते जल्दी हमें वैक्सीन बाहर करि परिबा सेते जल्दी हम इकोनॉमिक एवं इमोशनल लॉस गुडा को प्रोटेक्ट कर रख परिबा हम सिटीजन सो हमको कौन सिखेला कोविड 19 ना सिखे देला वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऊपर आउ कौन सिखेला आउ सिखेला हम ग्लोबल कोऑपरेशन क्लोरोक्विन टैबलेट जेतेबेले when there is international need से समय इंडिया एक्सपोर्टेड दोस टैबलेट्स इवन टू द डेवलप्ड कंट्रीज 1947 परे जेतेबेले भारत स्वाधीनता पाइला तापरे हम पाखरे फूड इनसिक्योरिटी देखिया को मिलुतला दैट्स व्हाई वी आर इंपोर्टिंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए सो से समय इंडिया को कहला इंडिया गोटे बेगिंग बाउल कंट्री इंडिया पाखरे खाइबा पई तार इंडिया डजंट हैव फूड टू फीड इट्स ओन पीपल दैट्स व्हाई इट इज इंपोर्टिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज नाउ सेम जिंस को इंडिया सुझे देला COVID-19 समय रे जेतेबेले when there is a global pandemic and there is urgent requirement of health emergencies important medicine मानकर आवश्यकता पड़िला and India as a विश्व गुरु shouldered the responsibility exported all those products food product गुडा को एक्सपोर्ट कर देला मेडिसिन प्रोडक्ट गुडा को एक्सपोर्ट करला इवन टू डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए एवळा कंट्री को मध्ये इंडिया एक्सपोर्ट करते सो इट शोज कि India is not reluctant or India is very much open for international cooperation global health issue somewhere by health hazard by health pandemic time period it has already been proved so जदि हम देखिया ग्लोबल कोऑपरेशन आवश्यकता अछि काहे कि ना किछि कंट्री मे बी एमती ही पारे जल्दी रिसर्च डेवलपमेंट करि किछि नुवा मेडिसिन बाहर कर दै पारंती बा किछि नुवा सॉल्यूशन बाहर कर दै पारंती सो इट नॉलेज ट्रांसफर हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ऑटोमेटिकली इट विल बी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ कार लाइफ प्रोटेक्शन नै परिबो आ गोटे कंट्री देन आउ कोन ना इक्विटी इन हेल्थ रेस्पॉन्सेस इक्विटी माने कोन इक्विटी माने समस्त को पाखरे एटा पहुंचवा दरकार अफोर्डेबिलिटी अफोर्ड वे रे इट शुड बी रिचेबल टू ईच एंड एवरीवन एटा अफोर्डेबल होवा दरकार समस्त को तार सॉल्यूशन कोन एमपॉक्स जदि एमपॉक्स बर्तन आसुची कोविड 19 परे हम एटे सॉल्यूशन कोन नै परिबा फर्स्ट सॉल्यूशन वी कैन स्केल अप प्रोडक्शन हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करि परिबा को प्रोडक्शन इंक्रीज करबा ना वैक्सीन प्रोडक्शन इंक्रीज करबा कथा के सिखै गला ना कोविड 19 सिखै गला कोविड 19 कहला कि वैक्सीन प्रोडक्शन को इंक्रीज करा एज पर द रिक्वायरमेंट एवं अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स जेमते हम देखले देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर ऑफ डॉक्टर्स नंबर ऑफ नर्स नंबर ऑफ पैरामेडिक स्टाफ्स देयर इज अ शॉर्टेज सो ये शॉर्टेज को ओवरकम करिया पे हमको कोविड 19 कहला देन आउ कोन ना कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जदि हम पाखरे पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी नाही then there could be technology transfer को हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करबा जो कंट्री रे अवेलेबल अछि टेक्नोलॉजी जो कंट्री पाखरे टेक्नोलॉजी अवेलेबल अछि से कंट्री टेक्नोलॉजी हम आनि यूटिलाइज करबा इंडिया ताको कॉम्प्रिहेंसिव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा जाउची देन इज कोलैबोरेटिव नेगोशिएशन कहा भीतर ना दिस इज एन इंटरनेशनल अफेयर बा इंटरनेशनल एस्पेक्ट हमें कहबा डिफरेंट कंट्री से माने कोलैबोरेट करबा दरकार कोऑपरेट करबा दरकार विथ ईच अदर ई पैंडेमिक टाइम पीरियड सो ये टॉपिक ना ये एमपॉक्स टॉपिक ये एमती कंटिन्यू हबो पुनी या पर आहुरी आपको आसीबो एडिटोरियल पुनी जेतोला आसीबो हम पुनी डिस्कशन करबा तो एटी किछि पेज छाडी देथिबो दि तीन पेज जेतोला आगो आसीबो से जगह रे भरि चलिबो लिखि चलिबो नोट्स ये गला थर्ड टॉपिक नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑन द हेवी shackle of fear and vigilance most important topic to be discussed and this topic is related to your Kolkata rape case this topic is very much related to Kolkata rape case ya purboru madhya I have discussed one to editorial I think in the last session related to women's safety in workplace and recently government of Kolkata is trying to put a restriction on the women's movement or late night duty जो माने करथिल तापर restriction put करथिला कि impose करथिला कि माने बाहर को जाई परिबेनी राती now is this the solution putting a restriction on the freedom of movement putting a restriction on the fundamental right of women and basically who is the 50% of the total population how far it is justiciable in a country in a democratic country like India we are putting or imposing restrictions on the movement on the freedom of women just to protect them from not to be raped just to protect them from not to be raped how far it is justiciable now there are so many laws there are so many institutions organizations voluntary organizations NGOs civil societies even laws and different protocols like Vishaka guidelines samaste dekhibe Vishaka guidelines achi then anti-sexual harassment related laws then ICC internal complaint committee related to sexual harassment in an industry ye sabu thiba satte women are not feeling safe women are not safe
महात्मा गांधी कहते समस्त जानी जदि राति 12 गोटे भारत राजरास्तार गोटे नारी जाली पारे ताहले आमे जानिबा कि भारत प्रकृत स्वाधीनता लाभ करिछि ये समय आम पाखरे एबे भी पहुंचनी राति 12 तो दूर कथा दिन में मध्य वुमेन आर अनसेफ they are not safe even if inside a public health emergency center public medical bhitar they are not safe in the public transportation system metro bus re gala bele madhya semane safe nuhanti they are not safe in the national highway in the state highway they are not safe in the banks institutions universities college school ye jaga re madhya semane safe nuhanti so it shows the rate of social justice that we have achieved or the rate of empowerment women empowerment that we have achieved in the last 70 years even after 7 decades of independence women right this is the time to revisit the women related laws women specific laws this is the time to revisit and rethink about women safety 1947 achieve पर्यंत जदि हम देखा या परे भी women are not safe then what is the difference mughal time period रे जा होतला british time period जेंते rights violation होतला what is the difference even if in a vibrant democratic country world a vibrant democratic country which india joti women are not safe so that's why we need to rethink about women's safety and we need to redefine what is women's safety also. We need to redefine what is women's safety also. Most important point, ये topic आपण use करिवे कोड ना sociology optional use करि परिबे आको sociology optional use करिवे essay रे use करिवे आपनकर Indian society जो paper अछि GS paper 1 रे mains रा GS paper 1 रे use करिवे तो ये बहुत बढ़िया बहुत important topic गोटे कहूची ये discussion मु करिवे कि we have to redefine safety what is safety ये safety टा कहार burden should we shift the burden of safety खाली हमें गोटे झियो ऊपर को गोटे वुमेन ऊपर को सेफ्टी टा को सेफ्टी रो डेफिनेशन टा को चढ़ाई देबा कि नहीं योर सेफ्टी इज योर रिस्पांसिबिलिटी नाउ व्हिच सेफ्टी इज दिस वुमेन सेफ्टी को मानिबा वुमेन सेफ्टी को इनकॉर्पोरेट करबा डे टू डे लाइफ रे सोसाइटी रे व्हिच रिस्पांसिबिलिटी is this the only responsibility of the woman who was raped is this the only responsibility of the woman who was molested in a public transportation system the answer is absolutely no then whose responsibility this is the responsibility of the society this is responsibility of the mass this is responsibility of the public eta public responsibility women safety provide kariba कोट ना public place माना करे so एठी we cannot simply shift the burden of safety हमें safety को कहि परिबने गोटे झियो को हम छोटो बडू देखि आछे this is the cultural taboo or social taboo that we have हमें कोन कहि आछे ना your safety is your responsibility your safety is your priority you should know how to behave in a public place you should know what to wear you should know how to behave how to whether to smile or not whether to laugh or not whether to move in a public transportation system at a late night or not ये सब जिनसे हमें छोटा बड़ो झियो को सिखि आछे कि your safety is your responsibility now it creates a psychological trauma it creates a psychological trauma लोक भाबुची झियोटा निजे भाबुची वुमन भाबुची कि मते प्रोटेक्शन दवार दायित्व मो निजर there is no society there is no collaborative approach there is जदि हमें सोसाइटी रे कोन पय अछि why social contract theory why government why if government is not able to provide security to a proper section particular community particular section of society then how far we can how far we are going to establish social justice how far we are going to establish different type of democratic rights so social justice democratic rights these are questioned nowadays and we cannot simply shift the burden of safety only to women ये होची main topic of discussion so actually the question is about fear and vigilance now when there is a violence on women जेतबे violence होची women ऊपर what is the psychological impact से women ऊपर से स्त्री लोक ऊपर impact कोन पडुची प्रथम impact होची mental health disorder कोन कहली mental health disorder so trust issue आसुची confidence lack of confidence रे तार economic impact आपण निजे बाहर करि परिबे जेमिति कि production कमी जिवो इकोनॉमिक इंपैक्ट कोन ना प्रोडक्शन कमी जो जीडीपी कमी जो कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी कमी गोटे झियो जदी डरिबो बारंबार तो से ऑफिस से जीवन ऑफिस न गले तार कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी कमी गला लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कमी गला फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कमी गला व्हेन यू टॉक अबाउट इक्वालिटी आर्टिकल 14 इज वायोलेटेड आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वायोलेटेड तो नो राइट टू इक्वालिटी सो मोस्ट इंपोर्टेंट कोन ना मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर क्रिएट होची देन देयर इज अ सब्सटेंस अब्यूज कंटीन्यूअस अब्यूज हेल्थ डिसऑर्डर long term effect जदि हम देखिया there is a chronic stress loss of trust ongoing fear so it impacts on the women's equality so when we talk about equality when we talk about article 14 the most important article of the fundamental right of the Indian constitution that is violated that is breached so it is psychological impact होची continuous impact पड़ुची कहा पर ना women health ऊपर women safety रो impact women health ऊपर continuously पड़ुची then there is an impact on freedom now come to article 19 of the Indian Constitution.
आर्टिकल 19 ऊपर कोन आर इंपैक्ट पड़छि देखंतु then there is a need to assess threats restricts women's freedom to explore take risk and enjoy simple pleasure. It affects the career choice and personal relationship. Now rethink about the Nirbhaya rape case. Nirbhaya rape case re there is a question on the personal relationship of the victim. If the victim was there in the night coach to a boss retila late night re with the male friend. Now, however, it is justiciable or put a question on the victim of on a rape victim that with whom she was moving. It is a democratic country and she has her own rights. She has her own freedom to choose the life partner. Right to love marriage. This is Article 21 of the Indian Constitution. Right to 19. Freedom of movement. This is a fundamental right. Now, how can we question Article 19, Article 21 of the Constitution? How ridiculous it is to question these significant provisions of the Constitution. So impact it there is impact on the freedom. There is a need to assess threat which restricts the women's freedom. Women's freedom restrict hochi, women movement upar restriction lagauchi. Women cannot enjoy the simple pleasures. It affects their career choice. It affects their personal relationship. So a karan manako pai there is a question on the fear and vigilance. There is a question on fear and vigilance. This is the most important topic. अपने आगे बुझिबा नेक्स्ट पॉइंट बुझिबा एटी सेट क्वेश्चन कोन आसुची ना वुमेन प्रायोरिटाइज सेफ्टी ओवर एक्सप्लोरेशन वुमेन प्रायोरिटाइज सेफ्टी ओवर एक्सप्लोरेशन से एक्सप्लोर न करी निज सेफ्टी टाको प्रथम देखियो कि मु सेफ रहिले तापर बंचिले तो तापर आगु कोन करिवि सो एठी फंडामेंटल फ्रीडम टाको हम डिनाय कर दोछ हैला सो प्रॉब्लम कोन ना प्रॉब्लम होची शिफ्ट इन द burden of safety already discussed कली. Then we can invest in the gender sensitive infrastructure. Gender sensitive infrastructure माने हमें women security guard सब जगह deploy करि परिबा. Then different application अछि pink application को जाउछि जोतरे किछि आपनकर emergency number रहिबो and in case of emergency on a single click information will be received by the police department. There will be 24/7 emergency department and relative जदि के थिबे father brother husband जी भी थिबे तांका पाखर मते information easily पहुंचो. So we can invest in the gender sensitive infrastructure. Then is improve legal framework. Legal framework and implementation already mu कहली विशाखा guidelines. Vishaka guidelines achi and there are many others like anti-sexual harassment rules laws are there. Anti-sexual harassment rules and laws are there. They are present but they are not being implemented properly. Only exist in pen and paper. केवल सेटा पेन एंड पेपर एग्जिस्ट क्वेश्चन देयर इज आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमिटी इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इन केस ऑफ इंडस्ट्री इन एनी इंडस्ट्री बट दे आर नॉट वेरी मच इफेक्टिव देन आउ कोन चैलेंज हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स हमको एटे अनेक गुडे हार्मफुल जेंडर नॉर्म्स देखिया पय मिलुची जो व्हिच इज अ सोशल टैबू देन आउ कोन करि परबा ना वी कैन इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग रे हमें वुमेन पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर परबा कोन कहली we can increase women participation in decision making so it is a type of empowerment कौन कर परिबा हम एटी it leads to more empowerment. Next topic को आसीबा same topic interrelated topic. This topic is on Justice 𝐒𝐄 committee report. Justice 𝐒𝐄 committee 2017 मसिया आसीथिला कोन पई ना टू एग्जामिन करिया पई sexual assault of Malayalam film actress. So ये रिपोर्ट सबमिट हला 2019 मसिया रे ये different type of issue which was faced by women in the Malayalam film industry से माने जो issue face करते ता ऊपर ये कमिटी रिपोर्ट फोकस करथिला सो इट प्रीलिम्स रे भी क्वेश्चन आसी पारे ए हिमा कमिटी रिपोर्ट कल्चर रे मध्ये आपको यूज करि परिबे आपण इंडियन सोसाइटी जो टॉपिक है लास्ट टॉपिक टॉपिक 4 ना टॉपिक 5 ना टॉपिक 4 रे भी जहां डिस्कस करले ये मध्ये दिस इंटरलिंक टू दैट एज सो एटी हिमा कमिटी दीटा पॉइंट ऊपर फोकस करले गोटेला सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को मानकर ना जो माने मलयालम फिल्म एक्टर्स बाय हूम ना बाय द इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री देन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस माने जो मानकर किछि स्ट्रांग कनेक्शन नाही जो मानकर किछि स्ट्रांग कनेक्शन नाही से माने दे आर द विक्टिम ऑफ कास्टिंग काउच so it is discriminatory practice this is a discriminatory practice so it apanଙ୍କର right to equality violate hochi right to life violate hochi then expression जो हम freedom of speech and expression that is also violated so 2022 रा डाटा कोची in 2022 there are 31,516 reported rape cases in India
show one rep in every 16 minutes. Kon कहले one rep in every 16 minutes. So workplace harassment, this is the reflection of this pervasive issue. Workplace harassment is the reflection of this type of increasing rape cases. केतेटा कहली in 16 minutes one rape in every 16 minutes. So total number of rape comes to 31,516. केतेटा केस देखो 16 मिनिट रे गोटे केस. So there are different legal institutional responses. Let's discuss like Vishaka guidelines of 1997. Supreme Court of India introduced guidelines to prevent workplace harassment. So एटी जे एम्प्लॉयर जहा पाखरे काम करूचंदी हमें सीए गोटे इंटरनल कमिटी रखिबो ये कुता गोटे कंप्लेंट रिड्रेसल मेकानिज्म रहिबो विशाखा गाइडलाइंस 1997 अनुसार सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस से. सो ये इंटरनल कमिटी को जदि कोनोसी रिकमेंडेशन जदि कोनोसी रिक्वेस्ट आसुची of sexual harassment by a female employee, then automatically the employer has to respond to this within a stipulated period of time. But problem कौन जानी चाहिए? सब गुड़ा का ना फॉर्मल सेक्टर ना जितने गुड़े सेक्सुअल हरासमेंट रा केस होगी सब गुड़ा को फॉर्मल सेक्टर ना उन अगर अपन फॉर्मल इंडस्ट्री कहबे रिलायंस इन्फोसिस टीसीएस विप्रो इट इज देयर इज द कमिटी जो गुड़ा को प्रॉपर्ली दे आर फंक्शनिंग एज वेल. बट जो गुड़ा इनफॉर्मल सेक्टर रही गला अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर रही गला हाउ टू मैनेज ताको केमती मैनेज करियो हैला. नेक्स्ट इज सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. ये legislation it is established the internal complaint committee already कहली ICC for addressing workplace harassment. So workplace harassment ये workplace टा include करछे टी कहा ए पर्टिकुलर जगह जदि हम देखियो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री को भी include करछे ना. we talk about the Malayalam film industry. तो एटी ये पॉइंट गुडा का मन रखबे इंडियन सोसाइटी रे जेतोल पढुचंती इंडियन सोसाइटी रे यूज करबा इंडियन सोसाइटी रे ए पॉइंट सब यूज करा जाओ. नाउ एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट को मूव करिवा नेक्स्ट टॉपिक की जीवा रोड टू 2047 फॉर इंडियन एग्रीकल्चर. विकसित भारत रा कथा में कहतले लास्ट क्लास रे मध्ये मु डिस्कशन करथि. विकसित भारत 2047 बा डेवलप्ड इंडिया. जदि हम देखिबा एग्रीकल्चर ये होची प्राइमरी सेक्टर. एग्रीकल्चर टा होची हमर प्राइमरी सेक्टर. वर्कफोर्स केते वर्कफोर्स रो टोटल परसेंटेज तो देखियो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स दे आर इन एग्रीकल्चर सेक्टर. बट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रो सेक्टर टू द टोटल जीडीपी इज लो. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द टोटल जीडीपी इज लो. केते ना इट इज ओनली 18%. वर्कफोर्स केते ना नियरली 46% ऑफ वर्कफोर्स दे आर इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. देन देयर इज अ ग्रोथ डिस्पैरिटी. यदि हम देखियो ओवरऑल जीडीपी हैज ग्रोन एट 6.1% एनुअली सिंस 1991-92. Agricultural GDP lagged at 3.3%. Last decade 2013 ରୁ 23 यदि हम देखियो ओवरऑल जीडीपी 5.9%. एग्रीकल्चरल जीडीपी ग्रोइंग एट 3.6%. ये डाटा बहुत इंपोर्टेंट. एटी जो डाटा देछि मु दिस डाटा इज वेरी इंपोर्टेंट. आपण एसए लेखंतु जीएस लेखंतु इकोनॉमिक्स रे लेखंतु एनवायरमेंटल लेखंतु को भी जगह लेखंतु ये डाटा को देबे जो पॉइंट परसेंटेज दिया है देबे एंड इट विल गिव अ यूनिक लुक टू योर आंसर. The future projection कौन कहूची ना 2047 सुधा agriculture रो share in GDP that might shrink to 7 to 8%. How much? 7 to 8%. But it could still employ over 30% of workforce. कहते it could still employ over 30% of workforce, necessitating significant structural change to avoid this unnecessary discrepancy. Unnecessary discrepancy कोडी ये कहूचे स्ट्रक्चरल चेंज प्राइमरी सेक्टर रो मूवमेंट करबा कोडी ना सेकेंडरी एवं टर्शियरी सेक्टर को कोडी सेकेंडरी एवं टर्शियरी सेक्टर. गवर्नमेंट एपर तो कोन इनिशिएटिव नै छै फील्ड रे जदि हम देखिबा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इरिगेशन पई कोन अछि हम पकरे ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना. रिस्क मैनेजमेंट पई फसल बीमा योजना इंश्योरेंस प्रोवाइड करूची प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस करूची. मार्केट एक्सेस पे यू हैव ई-नाम मार्केट एक्सेस करिया पे. फार्मर सपोर्ट पे यू हैव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम. एनहांस्ड सॉइल हेल्थ पे यू हैव सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम. सो दीज आर डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रमोट द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करिया पे प्रोटेक्ट करिया पे एक सब स्कीम हम पाखे अछि. नाउ व्हाई देयर इज अ नीड फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान.
हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को एथिपाई ग्रोथ करबा दरकार बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जेते बढ़िबो हमको कोन दरकार ना वी नीड टू अश्योर और एंश्योर फूड सिक्योरिटी हमको फूड सिक्योरिटी अश्योर करिया पे पड़ो जहा हम 3A अप्रोच कहूछ एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड ग्रेन्स जेहेतु पॉपुलेशन इंक्रीज होची इंडिया रो पॉपुलेशन इट विल बी 1.5 बिलियन बाय 2030 by 2030 1.5 billion 1.59 billion by 2040 so automatically प्रत्येक वर्ष जदि हम देखिबा फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट केते बढ़ुची ना 2.85% रिक्वायरमेंट बढ़ी बढ़ी जाउची प्रत्येक वर्ष फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट केते ना 2.85% बढ़ुची तो ताकू मीट करिया पई हेले हमको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रा आवश्यकता अछि एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करिया आवश्यकता अछि सो देयर इज अ फ्यूचर डिमांड 2047 48 सुधा जदि हम देखिबा so India re food grain demand is projected to range from 402 million tons to 437 million tons 402 ରୁ 437 million ton so automatically हम production increase करिया पे पड़ियो production into increase by 10 to 13% under the business as usual scenario ए scenario रे जदि हम देखिया production को हमको increase करिया पे पड़ियो केते 13% then what is the way forward solution हम कोन करि परिबा एटी ना प्रथम सॉल्यूशन होची रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर कोन कहली प्रथम सॉल्यूशन कोन ना रिफॉर्म इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर हमको प्रथम मानिया पई पड़िबो कि एग्रीकल्चर is not a symbol of backwardness this is not a symbol of backwardness जो माने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करूचंती हम देखले इन द ईयर 2002 agriculture it was chosen as a कोन prime moving force इंडिया को पीएमएफ हिसाब रे चूज कला वर्ल्ड बैंक एवं योर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑल द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दे रिकन्फर्म एग्रीकल्चर इज नॉट अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस सेम जिंस हमको मानिवा दरकार कि एग्रीकल्चर इज नॉट अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रा आवश्यकता अछि एग्रो सेक्टर डेवलप कले सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर डेवलप करियो we need to treat agriculture as industry second point kono we have to treat agriculture as industry बा कमे कहबा एग्रो इंडस्ट्री केमतिया को डेवलप करबा ना एथरे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करो कोन करिया ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप करि परिबा आउ कहा को डेवलप करि परिबा फूड प्रोसेसिंग डेवलप करले हम एक्सपोर्ट कर दवा एक्सपोर्ट करि परिबा लाइक माछ चिकन ये सब को प्रोसेस करि की बा डेयरी प्रोडक्ट देन आउ कोन ना अलाइड एग्रीकल्चर को प्रमोट करो खाली एग्रीकल्चर नुहे आउ कोन कहली ना अलाइड एग्रीकल्चर क्या थिवो हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर सेरिकल्चर ये सब को पढ़ाओ ताको फॉरेन कंट्री को पठाओ फॉरेन कंट्री को बिक्री करो पठे इला अलाइड एग्रीकल्चर को इंक्रीज करि परिबा एग्रीकल्चर सेक्टर को इंडस्ट्री हिसाब रे ट्रीट करि परिबा देन एग्रो एक्सपोर्ट को हमें बढ़िया एग्रो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करिबा डब्ल्यूटीओ रिजम एटा कले कोन होबो ना एटा कले हमर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़िबो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़िबो जदि हम एग्रो प्रोडक्ट को अधिक एक्सपोर्ट करू आउ कोन करिबा आउ कोन करा जाय परिबो ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट आई फील्ड रे हमको इंक्रीज करिया पई पड़िबो बट टेक्नोलॉजी टा को अधिक यूज करिया पड़िबो इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी को यूज करिबा एग्रीकल्चर फील्ड रे यदि हम देखिबा प्रथम होची मैकेनिकल टेक्नोलॉजी मैकेनिकल टेक्नोलॉजी रे कोन यूज करि परिबा हमें ना हमें यूज करि परिबा ट्रैक्टर पावर टिलर कल्टीवेटर हार्वेस्टर ये सब को यूज करि परिबा वुमेन फ्रेंडली मैकेनिकल टेक्नोलॉजी मध्ये यूज करि परिबा आउ कोन ना केमिकल टेक्नोलॉजी रे कोन यूज होबो ना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स ये सब को यूज करि परिबा देन बायोटेक्नोलॉजी रो कथा बर्तमान मु कहउतली ऑलरेडी डिस्कस करथली एटी हमें हाई यील्ड वैरायटी सीड यूज करि परिबा क्लाइमेट रेजिलेंट सीड एटी यूज करि परिबा बायोटेक्नोलॉजी रे आउ कोन यूज हे परिबो ना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करि परिबा इंफॉर्मेशन पाइबा पई हला सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जोडा को हम एग्रीकल्चर रे यूज करिकी एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाई परिबा एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िले ऑटोमेटिकली जीडीपी बढ़िबो एक्सपोर्ट बढ़िबो
एक्सपोर्ट बढ़िबो, पर कैपिटा इनकम बढ़िबो, नेशनल इनकम बढ़िबो, वी कैन एस्टैब्लिश फूड सिक्योरिटी, कोन करि परिबा फूड सिक्योरिटी एस्टैब्लिश करि परिबा एवं इंडस्ट्री गुडा को रिलेवेंट इंडस्ट्री गुडा को मध्य बढ़िबे, इंडस्ट्री गुडा को मध्य ग्रो करिबे। सो एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़िले एते सब बेनिफिट हमकु मिलुची, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मध्य बढ़ी, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी मध्य इंक्रीज हो एग्रीकल्चर सेक्टर टा डेवलप। So these are the benefits of development of agriculture sector. So ये वाला important point related to agriculture. एमती agriculture ऊपर आहुरी अनेक आसीबो, एडिटोरियल में आगे आहुरी डिस्कशन करिया। I hope समस्त को हेल्पफुल होची सेशन। मैं ऑलरेडी कहली को टॉपिक टा कोडी को ऑप्शनल पई इंपोर्टेंट, को टॉपिक टा जीएस रो को पेपर 1 2 3 4 पई कोडी इंपोर्टेंट। सो ए वीक रे केवल इंपोर्टेंट एडिटोरियल में डिस्कशन करछे, सब पढियार पे आवश्यकता नहीं। जो 6टा इंपोर्टेंट पॉइंट ऊपर आज डिस्कशन कली सेतरु अधिकतर रहिला का ऊपर ना वुमेन सेफ्टी ऊपर, वुमेन सेफ्टी ऊपर रहिला, देन एग्रीकल्चर ऊपर रहिला, बायोटेक्नोलॉजी ऊपर रहिला जोटा एमपॉक्स ऊपर रहिला। ई टॉपिक मानक ऊपर हम डिस्कशन कले, तेनो ऑलरेडी कहली आकु यूज केमती करिवे। ये सब टॉपिक इंपोर्टेंट क्वेश्चन एतरो 100% आसीबो। एतर मेन परीक्षा परे हम देखिबा ए क्लास रो को क्लास केतरा क्वेश्चन आसी, आई विल शो यू। समस्त को देखेबी कि ए क्लास रो केतरा क्वेश्चन जीएस 1 2 3 4 रे को सेक्शन में केतरा आसी। बट द थिंग इज दैट judiciously you have to follow this initiative, you have to make your own notes, से notes को practice करिया पई पड़िबो, प्रिपेयर होबा पई पड़िबो, बारंबार ताको कोठी लिखिबे, इनकॉर्पोरेट कोठी करिवे 1 2 3 4 रे सेटा आपन निजे डिसाइड करिया पई पड़िबो। बट ट्रस्ट मी एतर क्वेश्चन जदी आसुची एई पॉइंट मानक ऊपर अपन एई पॉइंट को डिस्कशन करूचंदी, देन डेफिनेटली इट विल गिव अ यूनिक लुक टू योर आंसर। काहे कि एटा करंट बेस्ड डिस्कशन करूचे, करंट बेस्ड डाटा नोचे, एटा कोनोसी बही रे नाही, फिक्स जगह रे कि समस्त पाखरे अवेलेबल अछि। एटा केवल से मानक पाखरे अवेलेबल रहइबो जो माने एडिटोरियल को रेगुलरली पढुथिबे बा नोट्स को, जो माने निजे करि पारु नाहंते, डिफिकल्ट होउछ से मानक पई प्रिपरेशन, ये सिंपल इनिशिएटिव केवल से मानक। So I hope you enjoyed this session. जदि कहार किसी डाउट अछि, then let me know through the comment section. Definitely I will get back to your question by the next session. Next session में मु डिस्कशन करिवि। So जो पॉइंट ऊपर आज डिस्कशन कले आप समस्त पढिबे, जदि डाउट आसे पुनी मते पचारिबे, हम पुनी नेक्स्ट वीक रे डिस्कशन करबा आगु। That's all for this session. Thank you very much. Thank you.